हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता स्टोरी बेरीज के साथ और आप देख रहे हैं गपशप। आज मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ सोमा भट्टाचार्य से, जो कि बहुत ही बिंदास, आउटस्पोकन और रोमांटिक ऑथर है। उन्होंने अपनी राइटिंग करियर एज अ ब्लॉगर स्टार्ट की है और वो स्टोरी बेरीज के स्टार ऑथर भी हैं। ऐसे तो बाय प्रोफेशन वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, बट वो दिल से राइटर है। आइए हम मिलते हैं शोमा से और सुनते हैं उनकी जिंदगी की कहानी उनकी जुबानी। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता स्टोरी बेरीज के साथ और आप देख रहे हैं गपशप का दूसरा एपिसोड। टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस, शोमा भट्टाचार्जी। शी इज अ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर and her stories are very popular and very talked about. Let's hear it from Shoma herself. Hi, Shweta. Welcome to the show, Shoma. Hi. Hi, and hi, everyone. Yeah, sure. Well, firstly, here I am in an episode of Gupshup as a star Mhm. author. What more? I mean, this is the talk of the day, I guess, for me. And Mhm. about me, I am there in all my writings, in all my articles, all my short stories. I'm very much present. Mhm. And those who read me, well, Mhm. that is me actually. And coming to my, background. I come Mhm. from Guwahati, right? Okay. Capital of Assam. Yeah, and like if I talk about my background, I my like my native house was just on the just near a hill. There was green all Mhm. around. Nowadays, if I think of it, it's like a dream. Means there was a place like that, and Okay. yeah, it's hills everywhere. Everywhere it's green, and now like I stay in Gurgaon in an high rise, Mhm. and I think that was a place where I stayed, where I You grew miss the up. greenery, I guess. Very much. Means now I feel, because born in Northeast, I thought I took them for granted. These things, they Mhm. are like that. But here Okay. I come, and like it's almost a desert here, no? Like not, I mean, Mhm. Delhi, Gurgaon. Then I think, oh my God, how I have been blessed with. And even these days, it's still green. So, You Shoma, tell us, like, this writing was a passion from your childhood, or it has developed recently? नहीं नहीं, it was there from my childhood. मेरे घर में like Okay. all used to read lots of books. Mm-hmm. Like सबके अलग Okay. अलग choice थे. My father, my चाचा, my joint family था, my family. Even my grandma, she used to read a Mm-hmm. lot. And बचपन में Okay. मेरे दादू, everyone used to read. तो वहां से Mm-hmm. reading habit like and I got lots of books. Birthday में books ही मिलते थे, not anything else. And I used to Mm-hmm. read. And जैसे मैं अपने बुआ के बच्चे, What age did you started writing? it was almost, my daughter is 12 now. She started writing in around 10. मेरा भी वैसे ही होगा 10, 11. कुछ बड़ा कुछ नहीं लिखती, like small छोटा हाँ. story हो गया, Whatever, छोटा. so जो भी आप लिखते थे, या हाँ. इवन स्कूल में भी कुछ Mm-hmm. राइटिंग असाइनमेंट देते ना, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि कभी तो कोई पढ़ेगा, Okay. किसी को तो अच्छा लगेगा. इट नेवर हैपेंड दैट वे. Right. Okay. So हाँ, and then my first short story types got published in a magazine called Teenager. तब मैं 9th में थी, तो I used to Mm-hmm. post them, stories लिख के post करती थी. And I didn't have any Mm-hmm. hope कि कभी आएगा. बहुत जगह post करती थी. तो एक दिन I came from school, my mom said, क्या किया तूने? I said, क्या किया? Because I used to write to pen friends also. कुछ बनेगा, किसी से कुछ Okay. कहा तो नहीं किया यार. Okay. ₹100 का मनी ऑर्डर आया घर पे. देन आई थॉट कि क्या हो गया. देन पता चला कि मेरा ही एक स्टोरी था. दैट वाज माय That फर्स्ट must थिंग. be feeling like, so much of encouragement, getting that 100 rupee ka, या that. इसीलिए Mm-hmm. अभी मैं बता रही हूँ. आई थिंक नहीं, 20-25 इयर्स हो गया, बट वो ₹100 एंड राइटिंग के. एंड आई सॉ माय राइटिंग इन लाइक पब्लिश ना. अभी तो कुछ भी Mm-hmm. लिखो उसमें दिखता है, बट इन द मैगजीन आई सॉ, एंड दे गिव इलस्ट्रेशंस आल्सो. उस स्टोरी का नाम था Mm-hmm. पोटैटो चिप्स. तो इट वाज अबाउट Okay, अ that's quite interesting. या Mm-hmm. they gave illustrations also. सारे गर्ल्स का वो बने थे, so I remember. So it was something. Class ninth में. Then I kept writing small things, but फिर I started blogging. जब एक बार Mm-hmm. इंटरनेट आया, ब्लॉग्स आया, and my first blog started around 2011. तब मैं again I was in Mm-hmm. शिलोंग एयरपोर्ट, बरापानी एयरपोर्ट. वो एक साल का जैसे एग्जाइल टाइप्स का था फॉर मी. सो आई वेंट Okay. विद माय डॉटर एंड माय फुल टाइम हेल्प. सो वहां पे जब रहती Mm-hmm. थी, दैट वाज कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. जैसे मैं बताती, कोई मतलब नहीं था. तो वहां पे बैठ के आई थॉट लेट मी स्टार्ट माय ब्लॉग. So it was Wanderlust and Barapani Diary. So I wrote Achha. quite about my life there, and it kind of Mm-hmm.
गेव मी सम रिस्क, मतलब सोशल मीडिया थोड़ा-थोड़ा आने लगा था, तो लोगों को मतलब आई फेल्ट Uh-huh. कि अच्छा लगा, और इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग Okay. एक्चुअली माय लाइफ देयर एज़ एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एक ही फ्लाइट आता था वहाँ पे, तो हाउ वी Okay. डिड, हाउ वी मैनेज्ड एंड हाउ वाज़ द लाइफ देयर, हाउ वाज़ द लोकल पीपल, हाउ वाज़ माय डॉटर ग्रोइंग इन दैट प्लेस। सो वहाँ से Okay. स्टार्ट हुआ मेरा ब्लॉग। देन आई स्टार्टेड So how टचिंग। does your family support? What is your family support? How do they support you in your writing? What is their opinion about your writings? First I'll come to my like my father. He has been Mm-hmm. like क्या बोलूं, बचपन से ही इज लाइक एवरीथिंग। मेरे फर्स्ट Uh-huh. बुक्स लेके, इवन इवन इफ ही रीड्स अ गुड स्टोरी ना, नॉट माइन एनी Mm-hmm. स्टोरी, ही विल कॉल मी अप कि ये पढ़ना तू। तो देन माय फर्स्ट अच्छा. रिप्लाई विल बी, ये बंगला इधर नहीं मिलेगा, ये मैगजीन मुझको नहीं 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 उस दुकान में मिलता है, यू गो देयर यू बाय। So Shoma, tell us like how do you write? When do you write? You write in the because you have been telling us that air traffic controller mein shayad you work in shifts and you might not be having enough time to write. So when do you write? You write in silence, raat mein, ya fir back of the mind, everything it's going on, and then you just jot down those whatever is there in your mind. या सिंस आई वर्क इन शिफ्ट, तो मेरे टाइमिंग सबके साथ हमेशा मैच नहीं करता। सो Mm-hmm. इन अ वे दैट इज गुड आल्सो, लाइक जैसे दिन में सब चले जाते हैं, हस्बैंड लीव्स फॉर ऑफिस, डॉटर फॉर ऑनलाइन क्लास और व्हाटएवर, तब आई गेट सम Mm-hmm. लॉट्स ऑफ मी टाइम। सो आई थिंक Mm-hmm. हाँ उसी टाइम पे आई राइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मीन्स आई डोंट नीड एनी स्पेसिफिक टाइम, जो भी टाइम आई गेट, Okay. एवरीवन हाँ थोड़ा पीस एंड क्वाइट मिले एवरीथिंग, सो आई कैन राइट। Okay. So have you ever faced writer block? या इट्स अ ब्लॉक एंड ब्लॉक ओनली। So how do you handle them then? Maximum it is block only. Okay. बिकॉज मतलब एक फेज आता है व्हेन यू फील लाइक राइटिंग अ लॉट, नहीं फिर एक वही ब्लॉक Mhm. आता है, हाउ डू आई हैंडल दैट। हाँ दैट्स टफ, बिकॉज वो आई फील वो अपने से ही आता है फिर अंदर से कुछ लिखने का ना, लाइक मतलब Because इफ यू many a times we feel that there's a vacuum within, and then we are not able to express. Many हाँ a times thoughts are एंड there in the mind, but वो आप निकाल नहीं पा रहे हो. हाँ एंड समटाइम्स आई फील कि क्या लिखूं, एवरीथिंग हैज बीन रिटन बिफोर, ऐसा तो नहीं मैं कुछ नया लिख रही हूँ, आई डोंट फील दैट वे Mhm. कि इट्स ऑल हाँ, तो वो चीज होता है कि कुछ नया हो, कुछ लेट मी शेयर। तो इसलिए माय स्टोरीज आर आई Mhm. थिंक ऑल मी, मींस इट्स बेस्ड ऑन माय लाइफ। Yes, most of your stories are about self-expression, about about your the incomplete love stories are there. A lot of your write-ups are very interesting and very adventurous. Especially those incomplete love stories, like hunky dory and offline. So, ये सारी storylines आप लाते कहाँ से हो? Are these real life based or these are your imaginations and creativity? How do you do that? इनकम्प्लीट लव स्टोरीज तो सबके साथ ही लाइक होता होगा। Some people are blessed. I know that, but then a lot of people are not blessed with that. हाँ बट इन वही इनकम्प्लीट लव स्टोरीज भी एक क्वेश्चन है, वैसी पे आंसर्स है जो शायद कंप्लीट वाले में Mhm. नहीं है। तो Uh-huh. मोरलेस मेरा ही पार्ट है, और एंड So, हंकी डोरी। hmm. Tell us about Hunky Dory. You were saying हाँ something हंकी about that. डोरी We want to लाइक know who the hunk was. हंक तो कोई भी हो सकता है, बट Uh-huh. पॉइंट इज एक एज में आके क्या हम हंक ढूंढना बंद करें? आई एम अ स्ट्रिक्ट Ab- मम, है ना? Mhm. व्हाई शुड आई Uh-huh. स्टॉप? कि कॉलेज में हंक Mhm. होगा और अब 40 क्रॉस हो जाएगा, कोई हंक नहीं होगा। हंक तब भी होते हैं, आई तब मीन भी रहेंगे एब्सोल्युटली बिल्कुल तब भी बिल्कुल. रहेंगे। और वो हंक अगर आपके दिल में कुछ जगाए, आई बिलीव नॉट बैड, there's a part of you, it still Yes, there exists, is right? positivity in it. Absolutely, you Yeah. should feel So young I from was, within. मैं पार्क में जाती थी जब, लाइक आई यूज्ड टू लीव Mhm. माय डॉटर इन द बस स्टैंड, में पार्क में जाती थी एंड Mhm. पार्क है वहां पे, लाइक फिट पर्सन से आते होंगे ना, सो योर आईज आर इन फॉर अ ट्रिट, तो वैसे ही कुछ हुआ होगा नहीं, तब लगता है एंड माय रोमांटिक माइंड वर्क्स फुल टाइम। अच्छा अच्छा आज Mhm. बात होगी क्या? अच्छा कभी हाई बोलेगा क्या? Okay. मुझे बोलेगा, क्यों बोलेगा, व्हाई? तो लाइक दैट, मैंने इमेजिन, रेस्ट वाज इमेजिनेशन कि 2 साल बाद फिर अगर मैं उसी पार्क में वॉक में जाऊँ, मिलेगा मुझे हंक एंड यू नो हाउ विल यू डील विद इट? उसके बाद क्या होगा? सो लाइक दैट। एक्चुअली आई थिंक राकेश इसका सेकंड पार्ट, देन आई टोल्ड राकेश सेकंड पार्ट कैसे आएगा? शी इज सो वन ऑफ अस, आई मीन शी इज वन ऑफ अस, लाइक हंक Mhm. देखा उसने, बट सेकंड पार्ट आई डोंट नो हाउ टू ब्रिंग इट Uh-huh. अबाउट।
So I guess इसलिए stories थोड़े incomplete, that leaves some room for कि क्या हो सकता था, Mm-hmm. क्या होता. मैक्सिमम चीज की लाइफ में कोई आंसर नहीं होता. No, it doesn't Mm-hmm. means at our age, maybe at our stage, maximum चीज का कोई फिक्स आंसर नहीं होता कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा. So बिल्कुल बिल्कुल. yeah. So how do you write the stories? I mean, does theme पहले आती है या plots पहले आते हैं या फिर characters पहले आते हैं? How do you write that? What is your writing pattern or procedure? या जो अकाउंट्स में लिखती हूँ, जैसे ब्लॉग्स आई राइट, तो उसमें तो इट्स लाइक वट एवर आई फील एंड दैट, उसमें ज्यादा प्लॉट एंड थीम. बट आई हैव सीन दैट उनका भी, इफ आई स्टार्ट राइटिंग अबाउट माई ब्लॉग्स, अबाउट माई दिस थिंग, सो उसमें ज्यादा आई मीन इमेजिनेशन नहीं है, बट Mm-hmm. लाइक इट इज इन योर नॉर्मल लाइफ व्हाट यू कैन सी, जो है हमेशा वो दिखता नहीं है. एंड इफ आई It's राइट all द real life stories. ऑलमोस्ट या. एंड उसमें Okay. रिस्पॉन्स भी आता है लोगों का, लॉट्स ऑफ लाइक वुमेन दे फील द सेम थिंग, बट वो बता नहीं. एक Mm-hmm. आई रोट अबाउट माय स्पाउस, माय हस्बैंड, आई थिंक द The वन हू one who स्टूड. stood by me. That was या really nice. It gives a very good feeling. Like all those people who are unmarried and they are willing to get married. That write up अच्छा I ये think gives some kind of inspiration. Okay, रियली रियली this should be the life partner. Like. so lots of married like when they also came to me ki, we also forget to acknowledge our husbands and like that. Even I Mhm. remember मेरे एक बॉस है काफी हाई पोस्ट में, he also said that was my favorite the way you wrote, and he's a very good writer himself Mhm. also. So it seems कि it's strike मतलब it struck a chord with many people ना, like कि स्पाउस होते Mhm. हैं हमारे पास, we do not acknowledge क्योंकि रेगुलर लाइफ में इतना रोमांस का पिटारा खुल के आप बैठ नहीं सकते. Even if you want it, it doesn't happen that way. जी जी But जी. something is there, something. I think, most of your write-ups are, there's a lot of romance, dipped in romance. So, what makes Like you it, write such inspiring, beautiful stories? Where do you get I all can't these wait to कभी uh, मुझे भी लगता है कि thoughts? रोमांस से बाहर निकलूं, बट फिर लगता है ये 43 इयर्स में जब ये नहीं हुआ, आगे भी मुश्किल ही है. It's there in my writing. And that's really nice. I mean, because romance is something which is missing in our life these days. People Right, are so right. much into the professional life, and duties and responsibilities इतनी ज़्यादा होती है कि शायद romance कहीं ना कहीं missing हो जाती है. So I think हाँ, and that adds a lot of value to. In one of your yeah, it's, writing, The Living House, उसमें आपने काफी hmm. सारी मजेदार incidents लिखी है, like with the family members and the like no running water in the basin and all sort of stuff. So you have to say something, like आपको कुछ बताना होगा उसके बारे में, because that बिल्कुल sounds बिल्कुल. really interesting. You share some kind of funny incident, you'd like to share something with us. Please tell us something about that. Actually, that writing was a great hit in my family also ना, because वो जो घर Mm-hmm. के बारे में मैंने लाइक दैट वाज मेरा एकदम बचपन का घर, और एकदम Mm-hmm. हैपहैज़ार्ड एंड एन्जॉय. तो सबका लाइक लाइफ उसमें बसा है हम लोगों का ना, अभी भी. आई थिंक उसमें हाँ. भी लिखा होगा, मैं सपना भी देखती हूँ, वही घर आता है मेरा, वही रूम आता है, वही Mm-hmm. मेरा जो एकदम मतलब डिशेबल सा स्टडी टेबल वही आता है. मीन्स अब फिर से अच्छा. वो ऐसे बड़े नहीं होते, वही. हाँ, जब मतलब ड्रीम में तो फिर Mm-hmm. मैं उठ के सोचती हूँ ये तो मेरा घर नहीं है, ये कहाँ से आया? देन आई रिकॉल ये तो वही वो घर अभी नहीं है, लाइक वो फ्लैट्स बन गए जैसे नॉर्मल होता है. सो Okay. हाँ, और उसपे कोई फैसिलिटीज जैसे उसमें लिखा वो कुआं होता था ना, तो Uh-huh. पानी पानी लाइक ऐसे पुल. तो माई One has to pull the bucket and हाँ, all that. Huh? हाँ, मेरे मदर का वो था कि एक घर होगा जिसमें 24 पानी होगा, एक वॉश बेसिन होगी. शी ऑलवेज, मुझे लगा क्या बोल रही है. इस घर के अलावा कुछ हो सकता है क्या? दिस इज द बेस्ट वी कैन हैव, मतलब. बट उनके बातों से बाद में पता चला कि ये सब भी होता है. Okay, and one more thing, Shoma, tell us कि ये जो आपने एक बहुत ही beautiful ये जो इसमें like lot of people have liked and lot of people have commented. I guess this was about a beautiful letter that you have written to your माय daughter, डॉटर, dear Mimi. Yes, या that was वो really मैंने, हाँ, very warm and touching. What made you write that story? I mean that letter. एक्चुअली वो मैंने एक सीरीज टाइप का किया, तो डियर दिल्ली में आई Mhm. स्टार्टेड राइटिंग टू हर. एक्चुअली इसमें बड़ा चीजी बैकग्राउंड है, अगर आपने कुछ कुछ होता है देखा तो मदर लीव्स. इट्स अ वेरी Uh-huh. चीजी काइंड ऑफ थिंग, बट व्हेन आई स्टार्टेड डियर दिल्ली, आई थिंक 10 इयर्स बैक, जो वो 1 साल की हुई होगी, तो मुझे लगा ओहो, लाइक दिस मदर लिविंग लेटर्स फॉर अ डॉटर. आई जस्ट लाइक द आइडिया, जो आपको
बिकॉज Okay. हमेशा हाँ एक दिन बड़ी होगी तो यू कैन कम्युनिकेट विद हर, मे बी एट यू आर इन द सेम वेवलेंथ और नॉट. तो आई स्टार्टेड दैट सीरीज लॉन्ग बैक. तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं Okay. लिखती थी, एंड दिस वाज द लेटेस्ट आई थिंक. द Mm-hmm. वे शी ग्रोज अप, हाउ आई हैंडल मेरे मदरहुड, जो भी आई मीन कन्फेशन है, बिकॉज How are you आई as a mother to your daughter? हाँ वही दैट Because आपकी जो आपकी बहुत सारी वाज. stories, it's very carefree and open spirit, ready to experiment and very bold and like कोई fearless नहीं कुछ नहीं, it's very bindas kind of attitude. So हाँ. how do you grow up your daughter Nini as the same way you are, or you want some restrictions? Because आपने वो अपनी letter में लिखा है freedom without expectation, which was very catchy. So what is your take on that? Yeah, actually, everyone is her own person. So, as a Mm-hmm. mother, I believe, like, no, I don't, she is her own person. So, I have encouraged her to Mm-hmm. read. अभी वो लिखती भी है. But no, Mm-hmm. restrictions and all, I hardly believe in. ना कि मैं तो उसको Uh-huh. बोलती हूँ, अभी तो तेरे मम्मी जैसा बन. She is like more conservative. Okay. And one more story that you have written, it was about "Tum chale jaoge to sochenge." That is again very touching. So tell us something about that, because that is taken from the song Jagjit Singh ki जो Correct. story ये है तुमको line दिन. है full song. So हाँ. thus ये songs कहीं ना कहीं inspire करती है लिखने के लिए. बहुत बहुत ज्यादा, बिकॉज लाइक नो बचपन से मेरा और भी आर्टिकल्स अबाउट रेडियो. तो रेडियो खूब सुनती हम्म. थी बचपन से, लाइक अच्छा. हिंदुस्तान. जैसे गुलजार मेरा फेवरेट हो, तो एक एक लाइन एंड हम्म. लाइक दे वर सो रोमांटिक नहीं गाना, और उसके अंदर इतने इनहेरेंट मीनिंग. हाँ. तो व्हेन आई रोट दिस स्टोरी, आई थिंक इट वाज अबाउट लाइक ऑनलाइन, आई मीन ऑनलाइन, किसी के लिए अब यू हम्म. कर समथिंग, किसी को बिना देखे भी. एंड आई थिंक द लाइन वाज, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हम्म. हमने क्या पाया. क्या पाया? तो या, सो लाइक समवन इन योर लाइफ एंड वो मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा बिंग मेनी रीजंस, तो यू थिंक कि क्या हम्म. आप खो भी रहे हो, बट देन जो पाया उसका क्या. सो इट्स अ लाइक Right. बिग, आई मीन नो क्वेश्चन कि जो आपने पाया वो ज्यादा है कि जो आपने खोया. मीन्स दैट बैलेंस, यू नेवर नो द आंसर. जो पाया वो भी बहुत है, हम्म. बट जो खोया, हम्म. जाने उसको देना होगा आपको लाइफ में. आई थिंक इट हैपेंस विद ऑल. बहुत सारी चीज हम जाने देना नहीं चाहते, बट यू हैव टू लाइक दैट. सो इट वाज अबाउट दैट कि That उसमें वो. makes all of us matured in a way. किस तरह से आप उसको हैंडल करते हैं और कैसे टैकल करके आप जीते हो, that also makes you a better human being somewhere. हाँ, यू दैट वे यू गेन अ लॉट. उसको खो के अपने मतलब जो पाया, दैट इज ऑल्सो. तो यही Mm-hmm. सब अनआंसर्ड क्वेश्चंस आई बिलीव सबके लाइफ में ही होते हैं Mm-hmm. अबाउट. हाँ. तो ऐसे बहुत सारे गाने गाने का मतलब आई लाइक, जैसे गजल्स हो, कुछ हो, और छोटे छोटे लाइन्स है, और उनके साथ आपके मेमोरीज भी जुड़े होते हैं कि इस गाने का इस लाइन में भी कोई आई हैव गजल शेयर्ड या कोई इट. पोयम या कुछ ऐसा कुछ याद है which you'd like to say for us? Yeah, my favorite, I think, Something means which is favorite तो very बहुत close सब, to you. बट या आई थिंक मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा Okay. है. दैट इज Mm-hmm. बिग फेवरेट, है ना. इट्स Okay. बाय गुलजार ऑफ कोर्स. Mm-hmm. सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं. सो इट्स अबाउट, ये सबके साथ ही होता होगा. एंड Mm-hmm. इसके साथ मैं एक बंगाली लाइन भी कोट करना चाहूंगी, शेषर कविता Please, please, please do that. पोएट्री से. उसपे है, मतलब ये दोनों मैं रिलेट करती हूँ. Mm-hmm. তোমারে যা দিয়াছি তা তোমারই দান, গ্রহণ করেছো যত, ঋণী করেছো আমায় হে বন্ধু বিদায়. तो आई जस्ट एक्सप्लेन. तो उसमें Mm-hmm. कह रहे हैं, मैंने जो तुम्हें दिया है, तुम्हारे जा दिया छी Mm-hmm. ता तुम्हारी दान, वो तुम्हारा ही था. मैंने Okay. जो तुम्हें दिया है, तो इट्स नॉट दैट Mm-hmm. आई हैव गिवन यू. जो तुमने लाइक व्हाटएवर यू हैव गिवन मी, दैट उसी के लिए Mm-hmm. मैं ये दे पाई हूँ. वो तुम्हारा ही दान Mm-hmm. है. एंड तुमने जितना लिया है, आई एम लाइक ग्रेटफुल टू, आई एम इंडेटेड टू यू फॉर व्हाटएवर यू हैव गिवन मी. तो ये रविंद्रनाथ Okay. ने लिखा था इतने साल पहले. हाँ. तो I could मीन्स easily guess that because like staying here in Calcutta, I completely या, understand कि ये रविंद्रनाथ टैगोर का ही हो सकता है, none other than that. ये इफ यू रीड शेषर कविता, दिस इज वेरी माय Mm-hmm. फेवरेट आल्सो. तो जितना Mm-hmm. तुमने दिया है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. ऐसे नहीं कि मैंने तुम्हें दिया है. एंड इट Mm-hmm. वाज अ गुड बाय पोएम काइंड ऑफ बिटवीन टू लवर्स. Okay. तो यही चीज मैं गुलजार में भी देखती हूँ कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है,
सावन के कुछ भीगे-भीगे दिन रखे हैं और मेरा खत में लिपटी एक रात पड़ी है। सो ही आल्सो Okay. हाँ, कि जो मेरा जो सामान है तो तो उसमें शी सेज कि मुझे वापस कर दो लास्ट में, और आई रिमेंबर द लाइन्स। तो एंड इसमें से शी सेज कि वापस कर दो, बट रविंद्रनाथ सेज कि जो दिया है वापस क्या करोगे, वो तुम्हारा ही था, लाइक यू डोंट तुम्हारा हैव ही टू, था. तुम्हारा ही था, वही You're मैंने दिया। destined for that. Something about the ley land. आपने उसके बारे में भी काफी अच्छा लिखा है. How traveling helps you in writing. Tell us about that. दैट्स अ बिग, ट्रैवलिंग इज माय लाइक रियल पैशन ना। तो आई थिंक बचपन Mhm. से ही जब गुवाहाटी से बस में हम पापा का जहाँ पे पोस्टिंग ग्वालपाड़ा जाते थे, जो पहाड़ी एवरीथिंग, Mhm. और बस में जो दिखता है ना, माय इमेजिनेशन यूज्ड टू वर्क अ रियल लॉट कि इसमें घर होगा, Okay. उसमें पता नहीं क्या होगा। नाइट सुपर में हम Mhm. जोरहाट जाते थे, गुवाहाटी से जोरहाट, तो दिखता था ये छोटा सा घर, इसमें पता नहीं कौन है। सो इमेजिनेशन लाइक बहुत ओवर टाइम वर्क करता वहां पे। सो ट्रैवलिंग, या Okay. फिर वो ट्रैवलिंग आई थिंक मुझे खींच लाया, दिल्ली में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनाया, आई डोंट नो, मींस आई कुड हैव ऑप्टेड फॉर Mhm. अदर प्लेसेस आल्सो, तब लगा कि थोड़ा दुनिया भी देखना चाहिए। तो लाइक और ले इज लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड, आई थिंक आई हैव रिटन अबाउट दैट, एकदम दुनिया ही अलग है। मैंने Mhm. बचपन में लॉस्ट हॉराइजन का एक नॉवल पढ़ा था, शंग्रीला। तो Mhm. इट्स अ Okay. शंग्रीला वाज अबाउट अ वर्ल्ड लाइक नो, लाइक दुनिया से कोई, वहां पे लोगों का उम्र नहीं होता था बहुत। Mhm. मैंने लाइक क्लास 9th 10th में वो पढ़ा था, जब पीपल डिड नॉट एज Okay. देयर, वो अलग ही दुनिया था, मॉन्क्स थे, वो थे। तो ले गेव मी दैट काइंड ऑफ फीलिंग, नहीं जैसे पेंगोंग हो गया, वो हो गया एकदम लाइक कुछ दुनिया से लिंक नहीं है, कोई फोन नहीं कनेक्ट हो रहा था 24 आवर्स, तो मुझे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। So apart from writing, what are your other hobbies? आपको और क्या चीज में इंटरेस्ट है? एक्चुअली मुझे ज्यादा चीजें आती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट है। व्हेन आई सी पीपल की इतने सारे चीजें लोग कर डालते हैं ना, Mhm. कुकिंग हो गया, ये सब हो गया, तो आई थिंक Mhm. बचपन से ही लाइक, एंड फिजिकल एक्टिविटीज में तो बिग जीरो, एक पार्क में जाके हंकी डोरी हो गया, आई थिंक दैट्स ऑल। हाँ, एंड म्यूजिक पसंद है मुझे, मैं खुद गाती नहीं हूँ, बट Okay. देन लिसनिंग टू सॉन्ग्स और छोटे छोटे लाइन्स, वो सब मुझे बहुत याद रहते हैं। मतलब बचपन का कोई गाना सुना, अभी आज भी याद रहेगा कि ये गाना अच्छा. ऐसे आया था, दूरदर्शन में कोई मूवी देखी होगी, उसमें ये आया, Okay. न्यू So न्यू you क्विजीन। tell us something about your favorite dish or your favorite sweet. Because I know a Bengali cuisine itni zyada, like it's very popular and there are so many versatile, itni zyada उसमें varieties हैं कि it's difficult to opt for, one particular dish. So tell us या something मुझे about तो your sweet dish, your लाइक ना, favorite sweet dish, or लाइक हाँ, mm, एवरी बंगाली हु स्टेज आउट ऑफ कोलकाता ना, वी हैव अ फैसिनेशन कि कोलकाता न जाने क्या है हमारे लिए, जिसको प्रवासी बंगाली बोलते हैं ना, जो बाहर रहते हैं। सो मुझे तो जी लगता है जी. मैं अगर कोलकाता, इफ आई एवर कम, मींस कभी गई भी हूँ, और इतना मैं खाऊंगी, मेरे मतलब मेरा हार्ट कैसे वो सब लेगा, आई डोंट नो, मेरा हार्ट का लाइफ टाइम तो कम होने वाला है, इतने सारा कुछ वहाँ पे खाने का है, दैट्स सो रीजनेबल। बंगाली क्विज़िन इज़ आई मीन ग्रेट फेवरेट, वहाँ का फुचका हो गया, बस तो उसी का ही नाम आता है। फिर आई लाइक ऑल द फ्राइड स्टफ, वो तेले भाजा एंड वो अब मोचार मोचार चॉप एंड एवरीथिंग, रोल्स हो गया। आई थिंक Okay. कोलकाता का एक 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 चीज इज माय फेवरेट। So, तो एक और tell us something about your future writing plans. Apart from writing romance, are you planning to write something in fiction or in some other topic that you are interested to write in? एक्चुअली स्टोरी वेरी में आई थिंक मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट माय राइटिंग्स। आई नेवर थॉट कि ऐसा भी हो सकता है, लाइक आफ्टर डियर नीनी आई टोल्ड कि अच्छा ऐसा है, आई नेवर न्यू कि राइटिंग को मुझे सीरियसली लेना है। वो तो मुझे अच्छा लगता है, थ्रू माय सोशल मीडिया जो भी है, आई कीप राइटिंग। बट हाँ, दिस हैज गिवन मी अ प्लेटफॉर्म एंड नाउ आई कैन थिंक कि कोई फिक्शन लिखूं, मीन्स फिक्शन Mm-hmm. भी लिखूं, इट वोंट बी वेरी पॉलिटिकल काइंड ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट वुड बी Okay. लाइक रिलेटेड टू मी ओनली, माय लाइफ ओनली, और like that. But हाँ, this has given me a Mm-hmm. platform and now I can think कि मैं कुछ maybe लिखूं, because How I is can, your journey as a writer with StoryBerrys? well I think comparatively StoryBerrys में बहुत ज़्यादा time नहीं हुआ, उस हिसाब से Mm-hmm. whatever recognition I got means, and that star author award, oh my god, हाँ, मुझे award Yes. बहुत ही कम मिले life में, so it's a like prize thing। Mm-hmm. एंड वो आई थिंक टॉप 20 खोलने से एक बार डियर निंदी दिखता है, इट गिव्स अ बिग बूस्ट, यू नो, कि क्योंकि मैंने कभी Mm-hmm. उसको वैसे लिया नहीं, लिखती हूँ ठीक है, Mm-hmm. ऑलवेज थिंक मैं कि मैंने कुछ नया लिखा क्या, हैव आई रिटन समथिंग दैट पीपल हैव नॉट रिटन बिफोर, कुछ अच्छा लगेगा क्या लोगों का, सो मेनी क्वेश्चंस। बट इसके बाद जो फीडबैक आ रहा है, जो लाइक आई गॉट अ बिग प्लेटफॉर्म, आई मस्ट से,
राइटर्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, यू नो, हाउ टू गेट एसोसिएटेड विद स्टोरी बेरीज, व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस द यंग राइटर्स? First, so they should read. Reading Mm-hmm. habits, even I'll confess myself, जब से मोबाइल आया, reading तो has taken a big backstage. हमेशा इसमें नहीं, Mm-hmm. उसमें तो I think वही मैं बोलना चाहूंगी. And also like a languages, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, Assamese हो गई, नहीं, means our local languages, let us promote them all. Because English तो फिर भी we are keeping in touch. बाकी languages कहीं मतलब वो हो ना जाए. So how writing helps you as a you know, person, and how it helps you in your life? राइटिंग इट्स लाइक आपके दिमाग के सारे विंडोज खुल जाते हैं ना. इट्स एन ओपन, यू Mm-hmm. हैव सो मेनी आइडियाज पोरिंग इन. और जब आप लिखते हो लाइक जो अंदर आपके लाइक मेनी थिंग्स वी सप्रेस ना, वो एक तरह से बाहर It's आते about हैं. self-expression, right? या तो वो जो बाहर आते हैं, Mm-hmm. इट हेल्प्स यू काइंड ऑफ, इट हेल्प्स यू टू ग्रो अप. आप अपने अंदर सारा कुछ रखते नहीं हो, यू शेयर इट विद जो भी फॉर्म में आप शेयर करो और Mm-hmm. जैसे भी करो. तो एक तरह से अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो, बट इफ यू राइट इट आउट, तो वो इट कम्स आउट ऑफ यू. तो वो बैगेज, जो Mm-hmm. इमोशनल बैगेज, यू डोंट कैरी Does it बैगेज. help to handle stress and emotional drawbacks and, you know, frustrations at या times we all, does it मैं help अपने in that? बचपन का एवरी क्रश आई हैड, आई यूज्ड टू कम एंड Mm-hmm. राइट, नहीं कि ऐसा. तो एक बार मैं लिख लेती ना, धीरे धीरे वो क्रश फिर गायब हो जाता. सो Okay. तो हाँ, एक बार आप लिखना चालू करो ना कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपके अंदर. Mm-hmm. बिकॉज आई फील कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो रोमांस है वो ना, वो अपने हमारे खुद के साथ है. Mm-hmm. आई डोंट नो इफ आई कैन एक्सप्लेन. वो हम खुद से बहुत प्यार करते हैं कि मेरे लाइफ में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. सो दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ अदर्स, कि वो आएगा, वो सारा सॉल्यूशन, सारा मेरा रोमांस का पिटारा लेके आएगा ना, एवरीथिंग ही विल फुलफिल. एक्चुअली बेसिकली इट्स आवर ओन थिंग ना, कि ये चाहते हैं. तो हाँ. वंस लिखो वो सारी चीज, दे कीप गेटिंग फुलफिल, कि मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ. वो प्यार हमें खुद से ही है बहुत ज्यादा, सबको ही है, आई बिलीव. सेल्फ लव इज द Okay. मोस्ट. तो वो चीज आप दूसरे में ना ढूंढो, और अगर अपने आप ही ढूंढो. एक लाइन मुझे याद आ गई गाने का, तुमको अपना ही तलाश Mm-hmm. करना है, चाहे कोई रहे ना रहे. गाना है सोनू निगम का. तो लाइक इट्स अबाउट माई सेल्फ ओनली. तो Okay. अगर आप लिखते हो, तो अपने आप से रिश्ता बहुत स्ट्रांग होता है. लाइक द बॉन्ड विद Mm-hmm. योरसेल्फ. जब Shoma, also let us know about your favorite author. ऐसे तो आई लाइक, बट फेवरेट ऑथर इफ यू आस्क, हाँ, इंग्लिश में अमिताभ घोष इज माय फेवरेट. Mm-hmm. हंग्री टाइड उनका आई थिंक फर्स्ट बुक आई रेड, एंड इट वाज Mm-hmm. लाइक, हाँ, इट हैड ऑल द एलिमेंट्स आई लुक फॉर इन अ बुक. नहीं, उसमें रोमांस भी था, उसमें ट्रैवल भी था, उसमें बहुत ज्यादा Mm-hmm. इमेजिनेशन भी था. एंड इट वाज अबाउट Right. सुंदरबन सा, वहाँ का लाइक नेचर कैसा था. सो Mm-hmm. देन मैं अमिताभ घोष के बहुत सारे बुक्स पढ़ी, एंड लाइक Mm-hmm. हाँ, ही इज माय फेवरेट ऑथर. उनका ट्रिलॉजी जो है, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, historical, he's into historical fiction, and like Mm-hmm. I'm a very big fan. हाँ, मुझे उनके सारे बुक्स बहुत पसंद है. And apart from that, Bengali आपकी books I फेवरेट बुक कौन सी है? हंग्री टाइड में भी, मतलब है तो Okay. बहुत सारे, but हाँ, और हाँ, बंगाली में लाइक एवरी गर्ल नौ हन्नते एक है. इट्स अबाउट लाइक अ वुमन, अबाउट हर. अगर आप पढ़ोगे नहीं, इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. Every Mm-hmm. girl in the teenage reads that book, na. It's a, like introduction to romance, to love. Okay. It's kind of real story how she wrote about that. और जहाँ पे like Mm-hmm. she falls in love with the person who was her father's disciple. So Mm-hmm. हाँ, No Unnati is one of my favorite novels, क्योंकि introduction to romance love उसी से होता है. But Tagore also have read a lot, and Okay. Sunil Gangopadhyay, Shishendu Mukhopadhyay. Like Bengali literature is a big part of my reading. Okay. All right. Shoma, I'll be asking you a very simple question, you know, fun-loving questions. So suppose you get a chance, एक time machine मिलता है, and you get a chance to go back in the past life, and what will you like to do? आप कुछ add करना चाहोगे, or would you like to, you know, delete something? What will you do actually if you get a chance to go back in your past life? Well, टाइम मशीन में मैं वापस जाती हूँ. आई सी अ लाइक गर्ल, नो, लाइक अंडर कॉन्फिडेंट एंड प्लम्प, बट अ वेरी हैप्पी गर्ल. सो बहुत ज्यादा कुछ मैं नहीं चेंज करना. ड्रीमी, अ गर्ल विद लॉट्स ऑफ ड्रीम. Mm-hmm. बहुत ज्यादा कुछ तो मैं चेंज नहीं करना चाहती. लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस होता तो द वर्क वुड हैव Mm-hmm. बीन अ बिट बेटर. दैट्स ऑल. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, दैट्स ऑल. बाकी आई एम वेरी हैप्पी Okay. द वे आई हैव बीन. Okay. बहुत कमियां तो Mm-hmm. थी, बट दैट्स व्हाट मेक्स यू व्हाट आई एम ना, लाइक दैट. Second question, Shoma. Suppose you get a chance to go out for a date with, you know, among all the characters that you have written in your story, आप किस character के साथ में date पे जाना चाहोगे? हाउ कैन इट बी अ Will रैपिड it? फायर क्वेश्चन? मैं
All characters So are so ठीक है, close. we'll make it more simple. We'll give you options. Will it be your hunky dory hunk, or will it be Rihan, or will it be a someone, you know, like an unknown person that we don't know about? Yeah, given a choice, वो हमने क्या खोया हमने क्या पाया, that Okay. that whatever online Mm-hmm. relation they shared, yeah, I'd like a date Okay. with, yeah, someone I've met online, कैसा होता है real में, like that. Okay. That's So my next expectation. question is, whom would you like to go out for a walk? Yeah, walk. I think Yes. हाँ मैं I think my husband, Your husband. my steady friend, my partner, walk के लिए, yeah, Mm-hmm. yes. Okay. Any last piece of advice that you'd like to give to women authors? एडवाइस देने की बहुत ज्यादा लायक तो नहीं, यू हैव नॉट डन एनीथिंग, बट स्टिल आई थिंक रीडिंग इज द बेस्ट थिंग इन Mm-hmm. लाइफ. मोर यू रीड Mm-hmm. एंड मोर यू एक्सप्रेस, एंड जितना ज्यादा हो आपके इमोशनल बैगेजेस जो भी है, Mm-hmm. लिव लाइफ किंग से थोड़ा क्लीशे लगता है, बट लिव योर लाइफ टू द फुल एंड उसको ही आप लिखो. देयर इज नथिंग Okay. रॉन्ग, लेट सोसाइटी एक्सेप्ट द वे यू आर. हमेशा जो भी पैरामीटर्स है उस पर फिट होना इट्स नॉट नेसेसरी. मेक योर ओन पैरामीटर्स, सेट पैरामीटर्स फॉर Okay. अदर्स. हम ऐसा हो सकते हैं जो सोसाइटी ने बनाया, वी Mm-hmm. डोंट हैव टू फिट इन दैट. Some extent yes, All but right. let us define ourselves again. Now we can't do that. We can have a career, Okay. we can have a family, we can write, we can have a wanderlust mind, we can Mm-hmm. wonder. So thank you so much, Shoma, for giving us your valuable time. We look forward to read more of such beautiful romantic stories, and we would like also, you know, like to know more about the fiction stories that you're planning to write. Thank you so much for your valuable time. Gupshup mein aane ke liye, thank you so much. Thank you so much, Shweta. It was really a pleasure. मैंने बहुत ज़्यादा बोला होगा, but then I really liked it. Yeah. Thank you so All much. right. Thank you.